Mongol Yomso, Miss Lune 2025, look a main event look is Miss Lune and Pana is sponsored to 1 lakh rupees. Engineer 𝗍𝗶𝘀𝘀 Gagu, Executive Engineer PMC for sponsoring the first runner-up. Thank you, sir. I would also like to call on the stage your favorite. And Dr. Dalong Padong will also do a very, very special presentation in the latter part of the evening. आप दिल थाम के बैठिएगा, वो भी स्टेज में आएंगे, आप सभी लोग आराम से दिल थाम के बैठिएगा. Miss Digital, which is Miss Popular, which carries an award of rupees 15,000. Dolung Ginar, Dolung Takam Lukanagam Ko, Subaka Award Larix, sorry, felicitation Larix, Rokom Tasung. We volunteers Lokagum Chairman, Miss Talent and sponsored rupees 15,000. We Miss 𝗟𝗂𝗍𝗲, Manengolu, Narame Upai Kaima, 𝗟𝗂𝗍𝗲 ko declare to my 15,000 ko program no mna I am obia na bimorum. I wrote a Tarab, thank you so much. The Indian picnic sirum gadun kienma. Bulu bogong apar bogodalo restriction kadung pa boisidu. Indian picnic sirum, bulu angong sisana yebosina group ko. Bulu picnic bulu rotina group ko. Ina bulu kapane Indian picnic sirum 15,000 rupees ko sponsored to Miss Twist of. Taka magarga pilik bito lare. Sponsor pilik biwa mulo moyum ke bulu kium ke program kamae. I would also like to call on this sponsored. I would also like to call on the stage one of the largest, highest sponsor of this Miss Lune 2025, my dear most respected, my dear friend Bibin Toy Modi, more than 1 lakh rupees for successful conduct of Miss Talent at Petty Retreat. Takama Irgama Pilik Bilanga, Petty Retreat lo Miss Talent event ito with Takam expenditure. Asilok ka, apinok ka Takam everything, he was the sponsor. Encouragement and your support. I would also like to call on the stage Ngoke Kaku, Advocate Martin Tamuk for sponsoring all the mementos for Miss Lune. Is my dear younger brother, Engineer 𝗍𝗂𝘀𝘀 Tagum, co-sponsors of Miss Lune 2025. I have just mentioned his name, but 𝗍𝗂𝘀𝘀 Tagum, we itanoko renpong kaku, inama we komahe, idakom takam mengge pelagidung, Engineer 𝗍𝗂𝘀𝘀 Tagum kom. Dreaming that you feel it too.
I'm so afraid of saying something wrong I never said I was insane. I wonder when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that though I will end up alright. I wonder if it's like to be loved by you.
attire, red gown. While in the meantime, please welcome, with a big round of applause, the reigning Miss Lune second runner-up 2024, 𝗟𝗵𝗻𝗀 on the stage, please. Ladies and gentlemen, Miss 𝗟𝗵𝗻𝗀, the reigning second runner-up Miss Lune 2024. Let's welcome the first runner-up, reigning first runner-up Miss Lune, Miss 𝗟𝗵𝗻𝗀. Now, ladies and gentlemen, let's welcome the reigning Miss Lune 2024, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀. Talented, the very beautiful Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀, the mentor of Miss Lune 2025. Ladies and gentlemen, here she is, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀 of 𝗟𝗂𝗶𝘀𝘀. Let's welcome the very handsome, the very talented, the choreographer of Miss Lune 2025, 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀. Is Mr. 𝗚𝗿𝗵𝗻𝗀 2023, managing director of Miss 𝗚𝗿𝗵𝗻𝗀.
2025. I would also like to call on stage. I would also like to call on the stage to receive this 𝗍𝗏, a very hardworking, young and talented individual who is the coordinator of Miss Lune 2025. I would also like to call on the stage to receive this small token of love from the organizing committee members. Ladies and gentlemen, I have the result with me of the 10 individual titles. The 10 individual titles, I will start with Miss Talent. Miss Talent of Miss Lune 2025. Any guesses, ladies and gentlemen? Miss Talent? Because most of you have not seen the Miss Talent contest, which was conducted at Petty Retreat, Pasighat. It was well, Miss Talent, Miss Lune 2025, it was a very, very tough competition for the judges as well. The judges for the evening was Miss 𝗟𝗶𝘀𝘀, Miss Lune 2017, along with Executive Engineer, PMC, as well as the music teacher of Government Higher Secondary School. They were the judges of Miss Talent 2025. And the Miss Talent of Miss Lune 2025 is contestant number. Miss Talent of Miss Lune 2025 is contestant number. Contestant number 5, Ruth Modi. And to do the honor of giving away this, I would like to call on the stage one of the sponsors of Miss Talent. Since he is not available, I would like to call on the stage Dr. Dalong Padum, please, to do the honor. Dr. Sahab.
Thank you very much. The next subtitle is for Miss Congeniality. Miss Congeniality is for being friendly, supportive. The Miss Congeniality of Miss Lune 2025 is Miss Congeniality of Miss Lune 2025 is she has been very supportive, she has been very friendly. Contestant number 11, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀. And to do the honor, I would like to call on the stage 𝗟𝗂𝘀𝘀 ji. I would like to call on the stage 𝗣𝗿𝗁 𝗍𝗏, please. Come and reach me now. I just can't believe what I have found. Standing here by me. Giving me the greatest gift you can. Saying yes and now my life begins. Using you daily. So take my hand now. Sing. 'Cause you made me into this man. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I need and I can be. Well, ladies and gentlemen, she is Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀, very friendly, very supportive. Miss Congeniality of Miss Lune 2025. Next subtitle is for Miss Digital Diva. Miss Digital Diva is commonly known as Miss Popular. आप लोगों ने जिनको फेसबुक में सबसे ज़्यादा प्यार दिया, सबसे ज़्यादा लाइक्स दिया, Miss Popular or Miss Digital Diva, Miss Lune 2025 is contestant number. Before to do the honor, I would like to call on the stage 𝗟𝗂𝘀𝘀. 𝗟𝗂𝘀𝘀 is sponsor of the Miss Digital Diva. And ladies and gentlemen, Miss Digital Diva, Miss Lune 2025 is contestant number 4, Teresa. You're my love, my life, my beginning. And I'm just a star like you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering all the times I've been alone. Show me the way you show. Let me hear, let me hold right through that door straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. Well, the next subtitle, ladies and gentlemen, is for Miss Graceful Hair. With the contestant with the most beautiful hair of this evening, ladies and gentlemen. Miss Graceful Hair is contestant number. And go, contestant number. And to do the honor, I would like to call on the stage 𝗟𝗂𝘀𝘀 sir. 𝗟𝗂𝘀𝘀 sir, please come up here on the stage to do the honor of giving the prize of this individual prize to Miss Graceful Hair. The contestant with the most beautiful hair, the most graceful hair, is contestant number 16, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀. You're my love, my life, my beginning. And I'm just a star like you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering The next subtitle, ladies and gentlemen, is the best ethnic attire
the best costume. आप लोगों ने देखा होगा first round. The winner of the first round or the best ethnic attire, the best costume of Miss Lune 2025 is contestant number. And to do the honor, I would like to call on the stage Sri Engineer 𝗟𝗂𝘀𝘀, Engineer 𝗟𝗂𝘀𝘀, former General Secretary of Central Solar Festival Celebration Committee. Former General Secretary of Central Solar Committee, 𝗟𝗂𝘀𝘀, Engineer 𝗟𝗂𝘀𝘀, and Best Ethnic Attire Miss Lune 2025 is contestant number 12, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀. Now, ladies and gentlemen, the next subtitle is for the best catwalk, the best catwalk of this evening. And to do the honor, I would like to call on this stage Sri 𝗍𝗿𝘁 once again, General Secretary of Central Solar Festival Celebration Committee. The best catwalk, ladies and gentlemen, is contestant number. Well, ladies and gentlemen, the best catwalk is obviously contestant number 1, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀. Well, ladies and gentlemen, she is Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀 with the best catwalk. And the next subtitle is for Best in Evening Gown. You are seeing all the ladies, all the girls out here in their red attire. The best in evening gown. And to do the honor, I would like to call on stage Chairman of Sports Committee, Central Solar Festival Celebration, Dr. 𝗍𝗏𝘀𝘀𝘀, please. Dr. 𝗍𝗏𝘀𝘀𝘀. And the best in evening gown. यहाँ में सबसे अच्छा evening gown जिसका है is contestant number. What contestant number? Alright, the best in evening gown is contestant number 12, 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀𝘀, once again. The next subtitle, ladies and gentlemen, is for Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀𝘀. Next subtitle is for Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀. And to do the honor, I would like to call on the stage Sri 𝗍𝗿𝗁𝘁, the sponsor of 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀 and former president of Central Solar Festival Celebration Committee. 𝗟𝗂𝘀𝘀𝘀𝘀 will also have the most beautiful smile, ladies and gentlemen.
And Miss Elegant Face of Miss Lune 2025 is contestant number 𝗙𝗵𝘁𝗲. Contestant number 3, 𝗟𝗂𝗲𝗏. So take my hand, see, 'cause you made me into this man. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, completing my world. You. Ladies and gentlemen, the last but not the least of the next subtitle, the last subtitle, Miss Twist of Fate, जिनका selection अभी फिलहाल में हुआ था. And to do the honor, I would like to request Advocate Martin Tamu, please. And ladies and gentlemen, Miss Twist of Fate is contestant number 10, 𝗠𝗶𝘀𝘀𝘀. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I needed, I can be. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stumped I got you. Girl, you are the piece I've been missing. And ladies and gentlemen, All the time I've been show me the way. Let me hear you. the last title of this evening, the last subtitle of this evening, ladies and gentlemen, is Miss Eloquence. Miss Eloquence, जिनका speech में सबसे ज़्यादा clarity था, जिनका speech में सबसे ज़्यादा power था, जिनका speech में सबसे ज़्यादा punch था. तो Miss Eloquence, Miss Lune 2025 is. उनसे पहले I would like to call on stage my dear friend 𝗙𝗶𝘀𝘀 sir. Please, this is the last subtitle of this afternoon. जिसके बाद we will proceed to the top 10, top 5 and end of this Miss Lune 2025. So Miss Eloquence, Miss Lune 2025 is, once again, ladies and gentlemen, is contestant number 12, 𝗟𝗂𝘲𝗏. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stuck on you. Girl, you are the piece I've been missing. Remember
the most awaited moment of this evening has arrived. I have the result with me for the top 10 of Miss Lune 2025. Are you ready? देखिए ऐसा है जिनको आप पसंद करते हैं वो आगे जाने से तो आप चिल्लाएंगे जिनके आप फैंस हैं वो थोड़ा पीछे रहने से आप मुकर जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी आगे आएंगे उनके लिए सभी चिल्लाना है all agree with me? All right, ladies and gentlemen, I have with me the result of Miss Lune Top 10 2025. Starting from, I will start from the top. Ladies and gentlemen, the first contestant on the top 10 Miss Lune 2025 is Miss contestant number 𝗙𝗂𝘀𝘀. The first in top 10 Miss Lune 2025 is contestant number 12, Miss 𝗟𝗂𝘁. In top 10 of Miss Lune 2025 is contestant number. Contestant number 2, 𝗟𝗂𝘁. The next contestant to be on the top 10 of Miss Lune 2025 is contestant number 17, in number 4 for Miss Lune 2025 is contestant number contestant number 1, 𝗚𝗿𝗵𝘃. The next contestant in top 10 Miss Lune 2025 is contestant number contestant number 3, 𝗟𝗂𝘁. The next contestant for Miss Lune 2025 is contestant number और थोड़ा जोर से बोले contestant number 4, 𝗍𝗂𝘁. The next contestant to be in the top 10 finalists of Miss Lune 2025 is contestant number 7, 𝗚𝗿𝗵𝘃. Contestant to be in the contestant number 10 of Miss Lune 2025. My heart is also thumping because well, ladies and gentlemen, the next contestant number 8 to be in the top 10 finalists of Miss Lune 2025 is contestant number 8, 𝗂𝗂𝘁.
girls will be selected. They have already been selected. The results is with me. Only 2 of you girls will be into the top 10 finalists of Miss Lune 2025. Ladies and gentlemen, the top 9 finalists of Miss Lune 2025 is contestant number. Only 2 remaining. Please name your contestant. Contestant number. Contestant number 9. To each and everyone for the error. There has been a clerical error. एक clerical error हो गया था. मुझे जो लिख के दिया है, I'm so sorry, Miss Lune, you are not in the top 10. I'm extremely sorry. I'm extremely sorry. जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे जो नाम लिख के दिया है वो जो कंटेस्टेंट्स है वो Alright, in the top 10 is contestant number 11, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀. Because there is a tie, I would like to call the first contestant who has qualified for top 10. There are actually 2 contestants who have qualified for the top 10 because of the tie. So there will be top 11. 11 girls among these 17 girls will proceed to the next round. The next contestant we have, ladies and gentlemen, is contestant number 9, Miss 𝗟𝗂𝘀𝘀. And the final contestant to move on to the next round of Miss Lune 2025 is she will be the last contestant to move on to the next round of Miss Lune 2025. She is contestant number. Please you guess, she is contestant number 16.
check, check. Well, ladies and gentlemen, now we will have the question and answers round to the question and answer rounds to the top 11 finalists of Miss Lune 2025. Respected judges, please be ready with your scoring sheet, and you will also ask the question to all the contestants standing up here to face your questions. There are the top 11 finalists of Miss Lune 2025. Judges may now ask the question accordingly. Well, my question is for contestant number 3. How are you feeling? Absolutely great. Are you nervous? A bit, but it's okay. So my question for you is, what is cyberbullying and what impact does it have on one's mental health? Thank you for your question. A very good evening, ladies and gentlemen. I believe cyberbullying is not just socially harassing people, but it is more than that. Also, it does not affect human mentally but physically, where people start isolating from society and society starts blaming. I'm so sorry, can I repeat my answer, ma'am? I absolutely believe that cyberbullying is more than online harassment, and I believe that it is more like people are anonymity valuing others in terms of looking perfect, being good, being the best on online platforms. But it is, I'm getting nervous, I don't know, ma'am. So thank you so much. So good evening, everyone. All of you are looking gorgeous up on the stage. So my question will be to contestant number 4. Do you think hello? Do you think pageant objectifies or empower women, and why? Good evening, Pascal. Thank you for your question, ma'am. I do not agree with the statement that pageant objectifies women. I strongly believe that pageant empowers women because it provides a very strong platform for us to stand for ourselves and our society. It gives us voice. I believe pageant gives us a platform to lead with purpose. And this is why I think pageant empowers women and not objectify. Thank you. Lovely, thank you so much. Hi, very good evening to everyone. My question will be to the
right on my side and the far left on your side. Contestant number 16, right? Yeah. So my question would be, in this recent year, especially due to the development in information and communication technology, we have seen a surge in body shaming. So how would you respond to that, or how would you prevent that? Thank you so much for your question, sir. Ladies and gentlemen, a very, very warm and prosperous salute, first of all. I believe that we should change and shift our focus from appearance to acceptance. We should chase body positivity. We should respect body diversity. Thank you so much. Well, my second question is for contestant number 7. How are you feeling? You look stunning tonight. How are you feeling? I'm feeling great, ma'am. So my question for you is, in an era of AI filters and digital perfection, what does true beauty mean to you? Thank you for the question, ma'am. True beauty for me is accepting the way you are. And in an era of AI filter where... I'm sorry, ma'am, can I please repeat the question? Answer again? Sure. Take your time, no rush. Ma'am, could you please repeat the question again? Sure. The question is, in an era of AI filters and digital perfection, what does true beauty mean to you? In an era of AI filters where everyone are forced to look like others, I believe true beauty, true beauty is accepting the way you are and being unapologetically you and not like anyone else. Thank you. Next question will be for the contestant number 12. Am I audible? Contestant number 12. Yes, ma'am. Yes. So do you have an Instagram account? Yes, I do. So based on social media accounts, I would like to ask, how does excessive use of social media like Facebook, Twitter, Instagram, or YouTube affect the mental health of young people? Thank you so much for the question, ma'am. Well, as per my understanding, yes, social media in today's world plays a very vital role. And in today's society, that we call Gen Zs, often look up in the social media and compare themselves with the perfectly shaped bodies and when the trends come and go. But we need to understand that social media is never real. What is real is that you're unique. And if you believe in yourself that way, you're unique the way you are. Thank you. Hi, my question would be to contestant number 8. So how are you doing?
then my question would be, suppose if you are crowned the pageant today, then how would you use this platform to empower the women? Thank you so much for your question, sir. And a very great evening to each and everyone here. To the question, if I win the crown tonight, I will use this crown as a voice to inspire young women. As I believe in myself, they should... Sorry, can I repeat it again, sir? Extremely sorry. To the question, if I win the crown today, I will use the crown as a voice to promote encouragement and empowerment to all the young women who deal with self-doubt. I want to promote myself in this platform that I believe in myself when I'm standing here, so you can. Thank you. On the stage, all the contestants to be back here on the stage, very proudly once again presenting to you, ladies and gentlemen, the top 17 finalists of Miss Lune 2025. Now, ladies and gentlemen, this is the final moment of Miss Lune 2025. One of them will become Miss Lune 25, ladies and gentlemen. I will start with the second runner-up. Second runner-up मतलब जो third place में है Miss Lune 2025 का third place में है. In the meantime, I would like to call on the stage the reigning Miss Lune 2024, the second runner-up, the first runner-up, and reigning Miss Lune 2024. So please be ready on the backstage with the crowning. All right, ladies and gentlemen, the second runner-up of Miss Lune 2025 is contestant number. Ladies and gentlemen, the second runner-up of Miss Lune 2025 is contestant number 4, I would like to call on the stage the reigning second runner-up, Miss Lune 2024, please.
stand up करो सबका धक धक हो रहा. Now, ladies and gentlemen, Miss Lune 2025, the 27th Miss Lune or Miss Lune 2025, who will be representing Asia in Miss Universe, Arunachal Pradesh, ladies and gentlemen. Miss Lune 2025 is contestant number. New Miss Lune 2025 is contestant number 12. Engineer 𝗟𝗂𝘁, Executive Engineer, PMC. Ladies and gentlemen, I present to you Miss Lune 2025, Miss 𝗟𝗂𝘁. Ladies and gentlemen, once again, I present to you Miss Lune 2025, Miss पेजेंट अभी जीता है आज, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है वो बता दीजिए। Very happy. Very nice. Nice because हम लोग का जो इवनिंग सेशन का डेज था वो 21 डेज का राउंड था और इसमें हम लोग मेंटोर तो हम लोग को स्टेप्स सिखाया, वॉक कैसे करना है, टॉक कैसे करना है। बोल सकते हैं कि मेहनत रंग लाया हम तीनों का नहीं every girls that participated all have gained some experience which will help us
उषा मैम अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, तो भी हम ये फर्स्ट अगर आप आए तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी लग रहा है और बहुत प्राउड भी लग रहा है, क्योंकि होता है ना जब एक्सपेक्टेड नहीं होता है और जब आता है, क्योंकि बहुत मेहनत भी किया है, लेकिन भी थोड़ा डाउट था, लेकिन अभी वो मिल गया तो अभी बहुत खुश है। आपका नेक्स्ट स्टेप जो क्या होगा? स्टेप अभी तो फिलहाल तो इसमें हम लोग अभी उसके लिए बहुत खुश है। अभी नेक्स्ट स्टेप बोले तभी हम लोग इसने भी बोला है ना, हम लोग आधी कम्युनिटी को बढ़ावा देना चाहेगा, जैसे अपना कॉस्ट्यूम ये सब, अपना आधी लैंग्वेज ये सबको। और फिर जो मैंने स्पीच में लिखा था सेल्फ लव का बारे में, अगर मुझे मौका मिलता है तो सेल्फ लव का हम प्रमोट करना चाहेगा कि आप जैसा है वैसा ही सुंदर है, और उसी में खुश है। और मेरा सवाल आप तीनों से है, जो लड़की अंडर कॉन्फिडेंट होकर मिलते हैं ना, उन लोग से आप क्या कहना चाहेंगे? अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है देन आई एडवाइस कि आप अपना आपको पहले पब्लिक का स्टेज पे होता है देन अपना वो ऐसा प्लेटफॉर्म में डालो जो लोग को ऐसे सिचुएशन को चैलेंज करते हैं, देन आप अपना फियर को ओवरकम करेंगे। तो आज जैसे कि आप लोगों ने इतना बड़ा टाइटल जीता है, तीनों ने फर्स्ट सेकंड और फिर रनर अप में भी आया है, तो आप लोग को जो ऑडियंस सपोर्ट करने आया था, आप लोगों को जो फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स जो भी सपोर्ट करने आया था, उन लोगों के आप लोगों का क्या कहना है? वेरी थैंकफुल टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो टाइटल इसने जीता है, मैंने जीता है, शी ऑल्सो डिड फर्स्ट रनर अप, राइट? सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग इज इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत सीखा है, बहुत सीखने को मिला है इसमें, और जो लर्न किया है मैंने ये जर्नी में, आई थिंक आई टेक दिस जर्नी विद मी वेरी फार इन माई लाइफ। एंड अबाउट योर क्वेश्चन, जो मेरा चाहने वाला, माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड द ऑडियंस, they came to support me, right? So not only mine, theirs also. Very grateful to them for supporting and very thankful. अभी गुड मॉर्निंग हो गया है, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मागियर लगो सेंट्रल सोलुंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी 2024 to 25 का मैं जनरल सेक्रेटरी, और मेरा टेन्योर ये साल ख़त्म हो रहा है। और सभी को थैंक यू आने के लिए, और हमारा जो सोलुंग फेस्टिवल जो है सक्सेसफुली आज ख़त्म हो गया, और जितने भी हमको जो पब्लिक सपोर्ट किया है, जो वेल विशर जो सपोर्ट किया है, उसको उन सभी को थैंक यू सो मच। मैं पहले से जितना भी हमारा मिस लूने जो कंटेस्टेंट है उसको मैं एडवाइस करते आ रहा हूँ कि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये शुरुआत है। और पासीघाट जो हमारे मिस लूने जो ये है, ओनली पासीघाट जो मिस लूने है हमारा मिस अरुणाचल में जो डायरेक्ट एंट्री मिलता है। तो उन सभी को मैं पहले से बहुत एडवाइस दे रहा हूँ कि आप कोई भी मिलो, बाद में आउट ऑफ 17 एक को ही मिलेगा, दो को ही मिलेगा, लेकिन आप लोग ये प्लेटफॉर्म का वजह से आप लोग खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन खुद मिलेगा, तो आने वाला दूसरा प्लेटफॉर्म में भी आप क्वालिफाइड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले से वही आप उसको एडवाइस दे रहा हूँ। और जो आज नहीं मिला है वो भी दुखी नहीं होना है। और जहाँ तक मेरा जानकारी है, मेरा ग्रूमर जो 𝗠𝗶𝘀𝘀 एंड हमारा जो मेंटर जो 𝗚𝗿𝘁 उन दोनों ने बहुत हमारा जो कंटेस्टेंट को बहुत आइडिया दिया, ट्रेनिंग दिया, तो आगे जाके भी शायद एनी प्लेटफॉर्म में वो लोग क्वालिफाइड होंगे। अभी तो जैसे कि पेजेंट खत्म हो गया, अभी तो गुड मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आप जैसे कि ये मिस लून है, तो आपका उसके क्या कहना है मिस लून के रिगार्डिंग? नहीं, ये मिस लून जो है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्यूटी पेजेंट्री इन आवर स्टेट। तो मिस लून आपका शुरुआत हुआ था 1999 में, एंड अभी इसका ये साल 27th एडिशन हुआ है आज रात को। तो सर जैसे कि आप चेयरमैन थे जी हाँ इस प्रोग्राम के, तो आप जब इसको कंडक्ट कर रहे थे तो आपने कुछ सोच के किया होगा, आपका रीज़न था, तो जो आपका रीज़न है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ आज रात? नहीं, विजन तो हमेशा रहा है कि हम लोग जितना आदि लड़कियों में, स्पेशली आदि यूथ ना, गर्ल्स, उसमें जितना पोटेंशियल है उसको हम लोग निखार के बाहर लाना है। उनका इनर ब्यूटी
विथ आउटर ब्यूटी और हिडन टैलेंट्स, वो सभी को हम लोग बाहर लेके आना है ना। तो हम लोग बहुत ट्राई किया, ग्रूमिंग सेशंस में भी बहुत ये सबको प्रेस करता है हम लोग। एक्चुअली एवरीवन थिंक्स दैट ब्यूटी पेजेंट्री इज़ ओनली अबाउट वॉकिंग, कैट वॉक, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्यूटी पेजेंट्री इज़ ए स्पोर्ट, आप उसको स्पोर्ट में गिन सकते हैं ना। तो उसमें बहुत कुछ आता है, आपका वॉक आता है, आपका टैलेंट को मतलब अंदर का हिडन टैलेंट को निकलने में आता है। उसी में हम लोग का टैलेंट राउंड भी होता है एक। उसके बाद में आपका है, हाँ ऐसे और है। सर आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस किया इसमें? या ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम? या एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम वाज ऑफ फंडिंग, क्योंकि आप तो जानते ही है वी आर नॉट बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर, ये कैलेंडर इवेंट नहीं है। तो जितना होता है हम लोग का सेंट्रल सोलुंग फेस्टिवल, वो जो सेलिब्रेशन कमेटी है पासीघाट का, उसी से हम लोग का फंडिंग होता है ना। एंड देन आप उसको भी देखेगा तो हम लोग को यहाँ में पासीघाट में हाउसी खेलने नहीं रहता है, लॉटरी नहीं होता है यहाँ पे। तो जितना हम लोग का सोलुंग कमेटी का फंडिंग है वो सब क्राउड फंडिंग से होता है। तो एवरी ईयर क्राउड फंडिंग भी तो, क्राउड भी तो मतलब पब्लिक भी तो कितना फंडिंग करेगा, ये साल करेगा, आने वाला साल करेगा, तीसरा बार में तो पब्लिक भी बोरिंग हो जाएगा ना। तो फंडिंग में हम लोग को बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता है। और हाँ सर इस बार का प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। या नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या और अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई डोंट नो, आई वुड बी और आई वुड नॉट बी, क्योंकि आई हैड द टर्म फॉर 2 years। हम लोग का जो सोलुंग कमेटी है वो 2 years के लिए बनता है ना। तो हमको 2 year के लिए मिस लूने का चेयरमैन बनाया गया था। तो पिछला बार में 2024 में हम लोगों ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया। तो उस समय में मैंने पब्लिक को एक सरप्राइज़ दिया था सिल्वर जुबली करके। एंड देन इस बार भी हम पब्लिक को सरप्राइज़ दिया है। जैसे आप देखा है, ट्रेडिशनली देयर वेयर 7 सबटाइटल्स, बट दिस ईयर हमने उसको 3 और एडअप करके 10 सबटाइटल्स किया है। और आप देखा होगा हम लोग का टॉप 10 राउंड को भी हम और आगे करके और बड़ा करके टॉप 11 किया है, ताकि जितना बच्चा है थोड़ा और चांस मिलते जाए ना सबको ना, इसीलिए। कि आप मिस लून का ब्यूटी कोऑर्डिनेटर है, तो आप उससे रिगार्डिंग लाइक आपने किस तरह से उनको वो किया, ट्रेन किया, एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस व्हाइल यू आर ट्रेनिंग देम, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली हम जो कोऑर्डिनेटर है वो लोग को जो प्रॉब्लम है वो सब हम ही देखता है। तो कोरियोग्राफी तो हम नहीं किया, उसके लिए हम लोग का बहुत एक्सपर्ट है, तुमगे कोई और नहीं है। वो लोग को हैंडल करने के लिए तो मेरे लिए तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो लोग का टाइम शेड्यूल सेट करना और वो लोग को टाइम पे एक साथ लाना और वो लोग का लाइक सब कुछ मिलाने के लिए बहुत तकलीफ था मेरे लिए ना। ओवरऑल बहुत तकलीफ था, लेकिन सब मतलब एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट से, ऑर्गेनाइजिंग टीम का सपोर्ट का वजह से हम लोग सक्सेस कर पाए है मिस लूने पेजेंट को। तो सर आप जैसे कि अभी जो विनर्स है, जो ट्रेनिंग है करेंटली 2025 में, तो आपका उनकी तरफ से आप लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू द फ्यूचर फॉर द सोसाइटी? एक्सपेक्ट तो हम लोग का एक्चुअली यहाँ में हम लोग का पहले तकम अंजू मैम आया था, जो मिस यूनिवर्स अरुणाचल का स्टेट डायरेक्टर है। उसने हम लोग को प्रॉमिस किया था टॉप 3 विनर को डायरेक्ट एंट्री मिलेगा मिस यूनिवर्स अरुणाचल में, और हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग भी उतना हेल्प करेगा जो हम लोग का विनर है। और हम लोग एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं कि आगे जाके हम लोग का पासीघाट को, आदि कम्युनिटी को बहुत अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट कर पाएगा, हम लोग का नाम को रोशन करेगा। हम लोग तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मतलब एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है और रखना भी नहीं चाहते कि आगे जाके अभी मतलब यंग गर्ल है तो उसका भी दूसरा ड्रीम भी हो सकता है। हम एक्सपेक्टेशन रखेगा, वो ड्रीम परस्यू करने में लग जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन पहले हो जाने से, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बहुत है। जैसे कि जो लोग नहीं जीत पाया बट दे वर वेरी गुड ऑन देयर ओन, जैसे कि जो नहीं जीता, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे वो लोग को, अगर आप एक कंपटीशन में पार्ट लेता है तो हार जीत तो होता ही है। अगर इस बार हार गया तो अगली बार ट्राई करो, क्योंकि
क्या पता अगली बार जीत, और मेहनत करके आ जाओ। इस बार वो लोग भी सब अच्छा ही था, लेकिन जजेस का हिसाब से, ऑडियंस का हिसाब से, टेबुलेटर का हाथ में तो नहीं था, जजेस का हिसाब से वो लोग का नज़र में थोड़ा सा कमियां रह गया ना, लेकिन वो लोग कम नहीं है, लेकिन 19-20 का फर्क रह गया, इसलिए 20 वाला जीत गया, 19 वाला रह गया ना। वो लोग भी किसी से कम नहीं है, वो लोग भी लाइफ में आगे जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। हमको तो हम एक्चुअली वो लोग का साथ हम 20 डेज नहीं 15 डेज साथ में रहे, हमको पता है वो लोग का कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है वो लोग ना, तो हमको पता है वो लोग कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो वो लोग भी ये पेजेंट को हारा है, लेकिन लाइफ को जीत के चला गया मेरा हिसाब से। वो लोग क्या कहते हैं उसको तो पता नहीं, लेकिन हम जितना देखा है वो लोग भी अपना दोस्त जीता है, वो लोग का जीता है, खुशी होके चला गया शायद। हाँ, हार जीत तो होता है, हारने वाला तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दुखी होगा, पर वो नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब प्रिपरेशंस करेगा बोला है। हम सबसे बात किया है पर्सनली।